हेलो एंड वेलकम टू देसीज इन परदेस। मेरा नाम है अदील और बड़े अरसे बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी बेगम के साथ, बहुत काबिल, बहुत खूबसूरत मनाल। हम एक सीरीज करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों की, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है इन्फेंट डेवलपमेंट। बट बिफोर वी स्टार्ट, मनाल प्लीज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सही, मेरा नाम है मनाल। मैं जो है अडल्ट साइकेट्रिस्ट हूँ। आई एम डूइंग माय फेलोशिप इन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री, सेकंड ईयर में हूँ। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना चाहती हूँ लोगों को, ताकि उनको पता चल जाए, क्योंकि अक्सर औकात हमारी कम्युनिटी में लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में या डिफरेंट राउट्स विच गो टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ के बारे में इतना पता नहीं होता। तो मैं बताना चाहती हूँ, साइकेट्री का मतलब है कि आपने मेडिकल स्कूल किया है, फिर आपने 4 साल साइकेट्री में रेजिडेंसी की है, उसके बाद 2 साल की चाइल्ड एंड एडोलेसेंट की फेलोशिप होती है। सो आई एम इन द सेकंड ईयर ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट फेलोशिप। सो दैट्स माय प्रोफेशनल काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। उसके जबरदस्त। अलावा हम जो है दो बॉयज के who are born here in the US, उनके पेरेंट्स हैं, and we're kind of navigating that bicultural kind of synthesis of identities where we are immigrant parents, और हमारे बच्चे जो हम देसी पेरेंट्स हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो परदेसी देसी बच्चे हैं। तो तो ये एक हमारा लेंस है मेरे ख्याल से। और हमारे And so we have a 4-year-old and we have a 2-month-old almost. 2 month old. So that's the other lens. Why we are talking about infant development is because we have a pandemic baby, as many people out there, I am guessing, have pandemic babies. So that is why we want to talk about infant development, because a lot of my friends have babies or are expecting babies. So subscribe to the channel. As we go through, we will be covering a lot. Okay? Wow. Zabardast. Acha, chalo. Okay, let's start here and now. Infant development. Where do we start? Infant development, I think, first of all, we need to establish what is an infant, right? So 0 to 1 years of age is when we call someone an infant, like we call baby an infant. So infant development. So one of the bigger things that I want to talk about today is, and I want people to take this message home with them, is that infants are complex, competent beings. They are, हम लोग social animals हैं, या हम लोग social animals हैं, तो हमारे बच्चे भी जो हैं, they're born with an apparatus which kind of is designed towards social engagement. So they are complex, competent beings, because a lot of times we have this misconception कि बच्चे तो बड़े जी वो होते हैं, like there's nothing in them and we fill them up with something. That's not true. They bring a lot to the relationship as well. So treating them with that respect, treating them as competent, complex human beings is important. So that's one important thing that we want to establish. यानी बच्चे भी उतने ही अशरफुल मखलूकात हैं जितने बड़े हैं। जी हम उनको उसी तरह, उस नजरिए से देखें, उस रिस्पेक्ट के साथ देखें। ये ना समझें कि बच्चा है तो उसके। और ये भी एक चीज होती है कि हम अक्सर औकात ये बात करते हैं कि बच्चे की तो नीड्स ही नहीं होती। बच्चा जो है, या तो उसका डायपर चेंज करना होता है, या उसको खाना खिलाना होता है, या फिर उसको नींद हेल्प करनी है। लेकिन इससे बढ़कर उसकी नीड्स प्रेडिक्टेबिलिटी की है, उसकी नीड्स कंसिस्टेंसी की है, उसकी नीड्स सोशल एंगेजमेंट की है, उसकी नीड्स जो है डिस्ट्रेस्ड, लाइक पेरेंट्स किस तरह अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, वो मॉडलिंग की। तो बहुत सारी नीड्स हैं बच्चों की, एंड वी विल गेट इनटू इट। बच्चे, ये इम्पोर्टेंट है रियलाइज करना कि ये चीजें हमें अपने जहन में रखनी है। और 2 चीजें मैं इधर और कहना चाहूंगी। आई वुड वांट, लाइक, वन ऑफ द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सीरीज इज टू हेल्प, because I know people who are watching this are already interested in parenting. They already are craving for this material, right? And we were craving for this material. Everyone's craving for that material, because there has been this realization that parenting is not something that we're born with. It's a skill that we learn, and we get better at it as we practice every day, right? क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि हम कहते हैं कि एक किताब में बड़ा अच्छा लिखा था, उसमें लिखा था कि कॉमन सेंस होगी और गुड इंटेंशंस होंगी तो पेरेंटिंग हो जाएगी, बन जाएंगे। लेकिन ऐसा तो हम बार्बर के साथ भी ऐसा नहीं करते, हम अपने क्या नाम है, अपने सर्जन के साथ ऐसा नहीं करते, हम अपनी टीचर्स के साथ, लाइक हम किसी भी रोल ऑफ लाइफ में ये नहीं सोचते कि 2 चीजें चाहिए। तो एक ऐसी चीज में हम ये सोच लेते हैं कि कॉमन सेंस है, इंस्टिंक्ट है। हाँ, ये तो एक नेचुरल सी चीज है, ये तो आ ही जाती है। ये तो जानवर भी करते हैं। जानवर भी। यही तो, और वी विल गेट इनटू इट कि जानवर के बच्चे और इंसान के बच्चे में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि इंसान का बच्चा जितना डिपेंडेंट होता है, उतना जानवर का बच्चा तो डिपेंडेंट नहीं होता ना। So that's जानवर के बच्चे तो
कुछ कहीं कहीं किसी किसी जानवर में तो within moments they can either move around by themselves or be more independent. Yeah. ठीक है. So, And at the same time, this having said that, तैयारी की जितनी भी जरूरत है, but at the end of the day you can prepare theoretically, conceptually, लेकिन सीखना तो आपको on the job ही, जैसे learning and development में हम तो ये कहते हैं on the job learning, तो सीखना आपको on the job ही है, लेकिन सीखना जरूरी है. सिर्फ अपनी instincts और common sense और उस पे, which is a good start, but then putting effort beyond that. ठीक है, yeah. okay, all right. So that's one aspiration. The other aspiration is for parents to become more curious, not just about this whole thing, but also about themselves. And I would want them to be more curious, more open, receptive, taking this information. I mean, yes, there is certain expertise that's being brought here, but then again, everyone is an expert on themselves or the relationships that they have. So think about those things. Take this as general advice. This is not a patient doctor relationship, so don't take it as that, but take it as advice and see where you stand with it. Okay. So open, curious, receptive, self-reflective. Everything that we do, we have to reflect on why we are doing it, right? That's an important thing to have. And then flexibility. It's really, really important. So those would be the aspirations. Before we jump in, we are setting the stage, but now we can jump in to infant development. So, okay. So as we have established, babies are complex, competent beings. But one of the things that we have to keep in mind is that baby has not tried out this work, has not tried this body out in this world. This is a new experience for them. And they do so much during the first year of their life because they go from this, like they're pre-verbal or they're horizontal. They're always lying, they're horizontal. And they go from that to taking their first steps. Their arm movements are so uncoordinated initially that they wake themselves up from sleep. You have to swaddle them and everything. And then they go on to using that apparatus to move around. Like they become so coordinated that they stand up and they start moving around. They go from being pre-verbal, not having any words, to start saying their first words. So there's a lot that happens in the first year of life. It is also important to keep in mind, this is the first time, again, they're trying out this body in this new world. So pehli baar, they are kind of experiencing some of the things like, मुंह पे हवा कैसी लगती है, भूख आप फीड किस तरह करते हो, डायपर कैसे चेंज हो रहा है आपका, उनके लिए ये बड़ा नया एक्सपीरियंस है और बड़ा वो है. तो everything is a first. जैसे हम एज इमिग्रेंट्स हम कहते हैं कि जब हम नई कंट्री में आते हैं तो हर चीज पहली दफा कर रहे होते हैं काफी अरसे तक. गाड़ी चलाना पहली दफा है, ट्रांजैक्शन कैसे करनी है सुपरमार्केट में, निजाम क्या है यहाँ पे, बैंक्स के काम के, टैक्सेशन के, क्रेडिट कार्ड के, एवरीथिंग इज अ फर्स्ट फॉर अस. एंड सो इट्स अ गुड वे टू थिंक अबाउट इट कि जो इन्फेंट के लिए भी एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम in their first year of life. And also it's not comfortable. Some of these bodily somatic changes, just bodily somatic changes or your shifts, these are not comfortable. It's not, I mean, all of us have pooped or peed, and these are not comfortable, but sometimes they're not comfortable bodily functions, right? So they are having these experiences for the first time. Some of them are not comfortable experiences. They're also trying out a variety of emotions first time in this world. They're experiencing crying, joy, sadness. I mean, they're experiencing a lot of emotions for the first time as well. So keeping that in mind, keeping all of those in mind. अब इसमें जहाँ पे parents का role आता है, और इसमें मैं थोड़ा सा वो करूँगी कि I will be using, maybe because I will default to the saying mother, because I will be seeing things through my own lens, and then maybe I will default to, when I'm talking about the baby, I will default to saying he, because we have boys. Because we have boys. So one of the things for mothers or parents to keep in mind, both parents, because that's your role as well, right? That's why you're here, to engage dads, and that dads can be involved in, like, dads are parents as well. So is you have to be attuned. Attunement का मतलब है कि जो बेबी गुजर है जिससे, उसके बारे में आप देखो क्या हो रहा है, आप समझने की कोशिश करो कि what are they going through, what is their need in that moment, and to provide
kind of responsive contingent care कि उसको क्या चाहिए figure out करने की कोशिश करें और उसके बाद वो उसको चीज पहुंचाएं और उस तक वो चीज लेकर आएं. So that is an important thing, attunement and responsive care. And this is important for the baby as well because this relationship is going to set the template for future relationships. बहुत सी बार हम बहुत सी चीजों में जब हमारी इख्तिलाफात हो रहे होते हैं लोगों के साथ, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ इख्तिलाफात हैं या स्पाउसेस के साथ इख्तिलाफात हो रहे होते हैं या पार्टनर्स के साथ इख्तिलाफात हो रहे होते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को इनेक्ट कर रहे होते हैं जो हमने बचपन में अपने माँ बाप के साथ सीखा होता है या जो हम नहीं सीख पाए होते हैं, जो हमारे उधर के हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए होते. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट these are the building blocks on which future relationships also are dependent. So जब आप किसी को वो attunement provide करते हो कि मैं I can understand you and I can provide that care, तो आप एक level of trust develop करते हो. For my folks who are in psychiatry or mental health, there's Ericksonian stages of development. Our first stage is trust versus mistrust. So they start realizing, especially if that's where consistency and predictability comes into play. So that this responsive care has to be persistent, and it has to be consistent and predictable, because this is how they develop trust. कि मुझे अगर तकलीफ होगी तो कोई केयर करता है और कोई कंसिस्टेंटली मेरे लिए उसको रिलीफ दिलाने की कोशिश करेगा. So they kind of understand that कि ये वाला डायनामिक हम एग्जिस्ट करता है ह्यूमन बीइंग्स में. ठीक है. All right, so to summarize then, here's what I'm gathering. पहले पार्ट में हमने बात की स्टेजेस कि कितनी बड़ी स्टेजेस हैं कि बच्चा इज अ कॉम्प्लेक्स बीइंग एज वेल, इंटेलिजेंट बीइंग, अशरफुल मखलूकात. एंड सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ठीक है, आपकी एक हायरार्की होगी एज पेरेंट्स एंड चाइल्ड, between parents and child, but the child is an autonomous is a being in him or herself, and therefore merit the warrants a respect as such in your role as a parent. पहली ये वाली हमने चंक में बात की. फिर हमने बात की, you use the word attunement. So what I'm gathering there is really observing and being able to make that connection कि हमें समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है. और वो वक्त के साथ साथ पेरेंट्स एक इंस्टिंक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है जिसमें आपको पता चलना शुरू होता है अपने बेबी के बारे में मुख्तलिफ एक्सप्रेशन से, या रोने के भी मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं जो आप ओवर टाइम थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देते हैं. और फिर रिस्पॉन्सिव केयर, which is responding to the needs or responding to the stimuli that you are receiving as a parent. और consistency, I love that. ये हमने कहाँ सुना था या पढ़ा था कि the best gift you can give to an infant is a monotonous schedule every day, or like a boring schedule every day, or like the same thing happens every day. And that's a great gift because babies crave a consistent schedule. Yeah, I mean, I think it was in that postpartum पे जो movie है, postpartum depression पे movie है, टुली के नाम से, I Tully or Tully, हाँ. So उसमें था कि what is monotonous or what's boring for you is actually safety and security for them, and that's where they learn to thrive. And you said really is something really nice about attunement and how you were describing attunement. And parents are like, we are born with like mirror neurons, so we can pick up when we see distress, we can feel distress. When we see happiness, we can pick up on those cues. Especially with our children, we are attuned that way to them. So that's another important thing to keep in mind. And vice versa, right? And so right, so जो complex beings की बात है, हम अक्सर बच्चों को reduce कर देते हैं binary emotions में कि या तो खुश है या खुश नहीं है, या तो खुश है या रो रहा है. But there is a range, and one evidence of that is they can pick up on tension as well. कि अगर कभी माँ बाप में झगड़ा हो गया या कुछ भी घर में कोई टेंशन है तो they can get it, they sense it.
मुझे इसमें वो हमारे एक जानने वाले होते थे, याद है कि जब बाहर निकले होते नए लोगों से मिले थे, आप थोड़े से एंग्शियस होते तो आपका बच्चा भी थोड़ा सा एंग्शियस हो जाता है, एंड दे पिक अप ऑन दैट, राइट? रिमेंबर दैट हाँ वी न्यू समवन हु वुड बी लाइक, ये ऐसी पहली बार कर रहा हाँ है, never done. And now we can see that it makes हाँ sense. So हम ये कहते थे कि देखो ये बेचारे हमेशा यही जुमला कहते हैं कि ये पहली बार ऐसा कर रहा है, लेकिन हाँ। किड्स वो पिक अप मजे की स्टोरी थी कि हम कभी एक एक हमारे दोस्त थे कपल, और उनकी उस वक्त वी डिडंट हैव बेबीज ऑन, एंड देयर चाइल्ड वाज अ टॉडलर एट द टाइम, no, even young, और they were इन्फेंट, younger. है ना, Yeah, infant. यंगर देन अ ईयर ओल्ड। और वो जब भी हम मिलते थे तो वो रोती थी या किसी बात पे कुछ जिद करती थी, और वो उनकी अम्मी और अब्बू कहते थे कि ये पता नहीं क्यों कर रही है, ये वैसे तो कभी नहीं करती, वैसे तो कभी नहीं करती। और हम थोड़ा सा डाउट करते थे कि और हम अब हल्का सा मजाक नहीं, हम डाउट हाँ नहीं, ऐसा डाउट नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा वो करते थे, प्लेफुल होते थे कि यार हाँ देखो ये हमेशा यही बात करते हैं और हमेशा हाँ ही करते हैं। बट हाँ आई थिंक दैट वाज लाइक जब आप लोगों के साथ निकले होते, स्पेशली विद कपल्स हु डोंट हैव चिल्ड्रन, हाँ देयर इज अ लेवल ऑफ एंजाइटी बिकॉज हम्म यू डोंट think that they will understand. हाँ Could be. I mean, I'm trying to have like मैं hypothesize कर रही हूँ उनके behalf पे, लेकिन that could be one of the things where you feel a little anxious around people who don't have their own राइट kids because they might miss out ठीक है on these things. ओके So yes, परफेक्ट so that is important. I think one of the when we were talking about relationship ke building blocks, there हम्म is also the reason why. I mean, one is they develop the trust for the world through that predictability or consistency, right? They feel more secure because एक बच्चे के लिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी और ये जो होते हैं सरप्राइजेस वगैरह, ये फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, क्योंकि वो बेचारा फ्लैट लेटा हुआ है। मेरे ख्याल से पेंडेमिक में, आई एम ऑल्सो गोइंग ऑन ऑफ टेंशन, पेंडेमिक में लोगों को इस चीज का एहसास हुआ होगा जब उनको लोगों ने, जब आप आईपैड पे किसी को कहते हैं ना, हम लोग अक्सर मरीज देखने, हम लोगों के टेलीसाइकेट्री हो गई थी और हम हाँ उसमें हमारे इमरजेंसी रूम में आईपैड के थ्रू हमें पेशेंट के पास लेके जाया जाता था। तो सही आप आईपैड में ऊपर छत की तरफ देख रहे होते थे क्योंकि किसी ने आपको आईपैड में इस तरह करके उठाया होता था, तो वो एक हाँ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस होती है। तो आप हम्म इमेजिन करें कि वो बच्चे में कितनी सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस होगी कि आपको अनप्रिडिक्ट, आप एक फ्लैट सरफेस पे लेटे हुए हो, आपका एक लिमिटेड विजन है हम्म और सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस आ रहे हैं। हाँ और उसके बाद दूसरी चीज जो है एजेंसी, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो बच्चे की नीड्स को, या हाँ बच्चे जो वो put out कर रहा है, he will feel understood and then he will internalize कि लोग मेरी agency है, when I throw something out in the world, even if it's a cry, people care, people respond. So that is also very important from that, to keep in mind बच्चों के perspectives, it facilitates the development of agency in them. सही है ऑलराइट Okay, so ओके व्हाट एल्स moving on, हाँ हमने बात की बच्चे की, हम्म इस डायड में, या डायड जिस दो लोग हैं, हम्म में एक पेरेंट है और एक बच्चा है, तो हम्म पेरेंट्स को चीज रियलाइज करनी चाहिए, जहाँ पे हमने जब बात कर रहे थे सेल्फ रिफ्लेक्शन की, कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी इस रिलेशनशिप का उतना ही पार्ट हो जितना ये पार्ट है। ये चीजें लेकर आ रहे हैं तो आप भी अपनी नीड्स लेकर आ रहे हो, ये अपना डिस्ट्रेस लेकर आ रहे हैं तो आप भी अपना डिस्ट्रेस लेकर आ रहे हो। और बहुत सी बार हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम अपनी, हमारे पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप्स थी, हमारे जो पास्ट ट्रॉमास थे, हमारे जो रिलेशनशिप के पैटर्न्स हैं, हम वो सब इस रिलेशनशिप में लेकर आ रहे होते हैं। एक बड़ा अच्छा what आर्टिकल does है। that mean? So give us an example. How does past trauma or my relationship with my parents show up in my relationship with my child? So for example, Hmm. एक someone who grew up with a harsh parent who was very critical towards them, ठीक अगर आपका बच्चा रोएगा तो आपको लगेगा, और आप उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हो, बच्चा चुप नहीं हो रहा, hmm. तो यू कैन स्टार्ट इंटरनलाइजिंग दैट एज बच्चा मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है। बच्चा, अच्छा क्योंकि मैं उसको सूद नहीं कर पा रहा, मैं उसकी उसकी एक्सपेक्टेशंस पे उतर नहीं पा रहा, बच्चा मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, interesting देन यू कैन बिकम हार्श टुवर्ड्स द चाइल्ड एज वेल। इसी तरह जो समवन हु ग्रू अप अराउंड like anxiousness or with a feeling of helplessness or something like that, hmm. अगर उनका बच्चा रो रहा है और they try to soothe the child, and the child is not being soothed at all, there could be this sense of helplessness, like मैं जो भी कर रहा हूँ, it's not materializing into anything, so why am I even bothering? So tendency to give up, tendency to feel that helplessness, और उसके बाद ये होगा कि withdrawal, आप विड्रॉ करने के, मेरी कोई एफर्ट ने रंग लाना ही नहीं है तो मैं एफर्ट ही क्यों करूं, तो आप विड्रॉ करने लगोगे, तो एंड दैट विल
impact the baby parent relationship as well. There's a really good write-up, and I'm throwing this out for my folks in mental health care, and Ghosts in the Nursery. It talks about parents' past traumas and how that impacts. And they give really good case examples of how that kind of gets translated into the relationship between parent and child. It's a very psychodynamic paper. So if folks who are interested in that lens of psychotherapy, it's a really good read. So yes, so keeping that in mind is that, and this is why self-reflection is important. Check in with yourself. Like if you're feeling distressed, if you're feeling overwhelmed, if you're feeling anxious, if you're feeling that this baby is being out to get me, then that's right. Like that's something to check yourself. How is a baby who's so helpless themselves making you feel helpless? What? And it's not from a judgmental standpoint. अपने आप को judge ना करें, लेकिन ये सोचें कि ये situation मुझ में क्या activate कर रहा है, ठीक है? तो ये बात है. Great. Before we end, I also want to talk a little bit about developmental milestones throughout first year of life to give some people like a lay of the land, what to expect. ठीक है. 2 months पे 8 weeks पे आपकी social smile आएगी, which is something that we are kind of like enjoying at this moment. You have put in a lot of effort in the first few weeks of life. There is sleeplessness. हमारे baby की time पे तो there was also some cluster feeding that was happening at night time. So there's a lot that's happening in the first few weeks. So this is like a little gift that comes your way that you can kind of enjoy and get a lot out, is the social smile. So that is one thing. और social smile को भी define कर दें. My understanding is a social smile is an intentional smile. वैसे तो newborns भी expression ऐसे बना सकते हैं कि आप तस्वीर खींच लें तो वो smile की तरह होती है. But a social smile is an intentional smile when it's a little bit of a response. It's like just map like a relationship based I think that comes out. Then the other thing is and then around 3, which is what our son has started doing now, is cooing sounds. वो बच्चे की जो प्यारी प्यारी cooing sounds होती हैं वो आने लगती हैं, ठीक है. उसके बाद 6 months पे बच्चा जो है वो upright बैठना शुरू करता है ना, तो they start seeing the world. So first हम जो कहते हैं कि एक maternal child reverie होती है, they are occupied with each other. That lasts first 6 months of life में माँ और बच्चा जो होते हैं एक reverie में होते हैं, एक sync में होते हैं. तो उसके बाद बच्चा upright बैठता है और पहली बार वो माँ की अपनी आउटलाइन को देखने लगता है, कपड़े देखने लगता है. उसमें orality जिसको he starts trying to explore the world through his mouth as well. So some of those things start coming in, and then they start communicating with their whole body, because अब वो अपने हाथ पांव चलाएगा, मुझे उठाओ वाली जो चीज होती है वो कुछ अभी भी दिखती है, लेकिन अब वो उस वक्त जो है वो पूरी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करने लगेगा. ठीक. जैसे वो माँ को देखना शुरू करेगा, कि माँ की आउटलाइन को देखना शुरू करेगा, तो उसमें थोड़ी सी वो भी पैदा होगी, एक सेंस कि अब लाइक एक सेंस ऑफ सेपरेशन, जिसको हम कहते हैं कि हम अलग हैं. मैं माँ का, और ये माँ के लिए भी है क्योंकि माँ भी लूज करती है ना बेबी को, तो उसको थोड़ा सा वो एक सेंस ऑफ वो होता है कि मैं अलग हो गई हूँ. तो बच्चे को भी ये सेंस होता है, और बच्चे को एकदम से ये भी फील होता है कि क्या नाम है, मैं एक बड़ी चीज था. जब तक मैं माँ के साथ एसोसिएटेड था, मैं एक बड़ी चीज था, और अब मैं जो नाउ it starts dawning. It dawns much later, but that's like the first flavor that they get, and that is when 8 to 10 months separation stranger anxiety starts coming in as well, where they become more aware of how small they are. And then we know that first words come, first birthday, first steps come, first birthday, first words, kind of a thing. So yes, those are some of the things that happen during the first year of life. एक चीज मैं एंड पे कहना चाहूंगी, जो मेरे अपने वालिद की अक्सर वो चीज याद आती है, जो उन्होंने भी सुलेमान के बारे में कही थे बिफोर वी एंड, कि जब तक बच्चे का गाल आपके गाल के साथ लगता है ना, जब आप उसको बर्प कराने के लिए वो करते हो, जो गाल की गर्माहिश होती है, जब तक लोग वो एंजॉय करते रहेंगे, तब तक मेरे को कहते कि लोग बच्चे पैदा करते रहेंगे. Enjoy. So that's a gift that starts very early on. You don't have to wait 2 months for that gift. That's a gift that the child gives you very early on. The warmth, the cuddling, the baby, the smell of the baby. The smell of the baby. The lint that gets stuck in there. I even like that. The cute little hands and toes, fingers and toes.
Okay, beautiful. So quick disclaimer or reminder, people know this already, कि ये milestones भी ये they're not set in stone. Yeah, yeah. है ना, तो वो 6 महीने पे जरूरी नहीं है, हो सकता है plus minus a few weeks or plus minus a month, and that's okay. Every kid is different, Every kid is different. and every infant is different. This is just giving you a lay of the land. It's not. ले It's not. ठीक है, It's not ठीक something है, that's like ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सही। एक कंपटीशन में भी कभी कभार पड़ हाँ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओके, सो लेट मी ट्राई टू सी इफ आई रिमेम्बर। ठीक है, मोटी मोटी बातें जो हमने की, हमने स्टेजेस की बात की, हमने कहा कि बच्चे को, और लेंस हम ये यूज करें एज पेरेंट्स कि बच्चा इज इम्पोर्टेंट, बच्चा इज अशरफुल मखलूकात। इम्पोर्टेंट तो खैर होता ही है, बच्चा आपकी Is जान है। respectable. Respectable and a complex being, so view the baby as a complex intelligent human being। वो बात हो गई। फिर हमने अट्यूनमेंट की बात की, रियली ऑब्जर्विंग, पिकिंग अप पैटर्न्स। फिर हमने बात की कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, और कंसिस्टेंसी में हमने रूटीन की बात की। तो रूटीन की एग्जांपल्स, routine meaning basic stuff, right? You waking up at the same time, try to every day, nap times रोज एक वक्त पे हों, इवन डायपर चेंजेस का स्केड्यूल, फीडिंग्स का स्केड्यूल, ये जितना रोज प्रिडिक्टेबल या जितना कंसिस्टेंट होगा वो बच्चे के लिए उतना अच्छा है। इट्स अ गिफ्ट फॉर द बेबी। Yeah. तो वैरायटी इज नॉट द स्पाइस ऑफ लाइफ फॉर द बेबी Yes, व्हेन इट and कम्स don't टू द surprise रूटीन। it. Don't surprise the नो baby. सरप्राइजेस, ठीक है। तो okay, that's good. And then the dyad, or the two parties, and you are also a party as a parent। हम अक्सर ये भी कहते हैं ना कि बच्चा हो गया, अब तो बस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द बेबी, और अब तो बच्चे के ही, और अब तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई। उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में, बट ऑल्सो इंट्रोस्पेक्टिंग एंड लुकिंग इनवर्ड्स के मेरे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं टुवर्ड्स माय और वो बेबी, कहाँ से आ रहे हैं, और वो कहाँ से आ और रहे हैं। ये रिएक्शंस कहाँ है, क्या है, और मुझ में क्या ऐसी चीज मुझ में एक्टिवेट हो रही है, और मेरी क्या ऐसी अनफुलफिल्ड नीड है। सही। And then maybe there is a hint of don't be too hard on yourself, कि No, अच्छा don't baby good जो enough parent. good enough parenting। And then if you're not able to get the baby to calm down in a few seconds, that's okay, Yeah, and we'll come to that, that living through the distress, right? living through the distress, but also giving yourself time and giving yourself a pass here and there as a parent। तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात आ गई, और फिर हमने ले ऑफ द लैंड और मेजर माइलस्टोन्स की बात की। बट इन्फेंट डेवलपमेंट इज अ बिग फेज, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द ईयर द बेबी इज taking the first steps, using Yeah. first words, and is becoming a little boy or a girl, I mean, uh, isn't that like miraculous? Like they all go within a year। all within a year without words to हाँ first हाँ words, हाँ हाँ without हाँ। like these movements to coordinated movements that support steps. अच्छा, लास्ट डिस्क्लेमर फॉर अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स, मेंटल हेल्थ वाले भी हैं, वैसे भी हैं, और हम ये चीजें सुन के हमारा रिएक्शन ये भी हो सकता है कि हम तो ये ऑलरेडी कर रहे हैं, विच इज ग्रेट, या Which is हमें तो great. ये तो हम पाकिस्तान में तो ऐसे ही करते हैं, हमारे कल्चर में तो यूं ही होता है, या हमारे बहुत रिलीजन में तो ये बात सिखाई गई है। एंड इफ दैट्स द केस, ग्रेट। yeah. नहीं, और हमारे हमारे कल्चर में कहा जाता है बच्चों के साथ शफकत के साथ, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी हाँ। वालदा कहती थी बड़ी बहन का अदब करो, तो मैं कहती थी तब करूंगी जब ये मेरे साथ शफकत के साथ बिहेव करेगी। हमारे हमारे कल्चर में है थोड़ा सा बच्चों के साथ आपको शफकत के साथ पेश आना है। तो अगर ऐसी बात है तो आप प्लीज अपना फीडबैक हमें अपने कमेंट सेक्शन में दें, ताकि हम वो चीजें भी इनकॉर्पोरेट कर सकें अगली बार। सी, आई एम मेकिंग अ प्लग फॉर योर हाँ, सो चलो, गिव अस फीडबैक। इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं जी। Yes. अच्छा, चलो, all right, this was fun, and so if you're watching this, please expect more of these videos। Yes, yeah. All right, good, thank you। Okay.